ICSE Mathematics Class 10th, Chapter 15, Exercise 15B, Question number 22. A rectangular sheet of paper 22 cm long and 12 cm broad can be formed into the curved surface of a cylinder in two ways. Find the difference between the volume of the two cylinders which can be formed. देखिए देयर इज ए वन पेपर शीट है, पेपर है जिसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक बार हम रोल्ड करते हैं एलॉन्ग 22 लेंथ वाइज, उस समय हाइट क्या होगी 12 सेंटीमीटर और सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड टाइम हम रोल्ड करते हैं उसके ब्रेड्थ के साइज वाइज, ब्रेड्थ वाइज, तो उस समय उसका लेंथ होगा 22 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस होगा 12। अब ये दो सिलेंडर बनते हैं, इन दोनों सिलेंडरों के वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होगा वी हैव टू वर्क आउट। देखिए यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्या है, दैट इज 2 पाई r इज इक्वल टू 12, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 12/2 पाई, हाइट विल बी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इंटू h, सो 12/2 पाई इंटू 12/2 पाई इंटू 22। अब देखिए ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया आपका, और 22, सो 12 3 जा 36, 22 अभी इस पाई की वैल्यू रख दिया, एक पाई जो बचा हुआ था, तो 22/7 कर दिया, 22 से कैंसिल हो गया। अभी 36 इंटू 7 दैट विल बी इक्वल टू 252 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम आ गया। इस सिलेंडर का वॉल्यूम देखते हैं, यहाँ सरकमफ्रेंस क्या है 22, so radius will be equal to 22 divided by 2 pi, height will be equal to 12 centimeter, volume इसको मैंने कैपिटल V से इंडिकेट किया है, volume will be equal to pi into 22/2 pi, 22/2 pi means pi r square into height that is 12। इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, हमारे को क्या मिला 462 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ द डिफरेंस यहाँ पर है स्मॉल v दैट इज 252, यहाँ पर कैपिटल V जो है 462 क्यूबिक सेंटीमीटर, सो कैपिटल V माइनस स्मॉल v दैट विल बी इक्वल टू 462 माइनस 252, सो दैट विल बी इक्वल टू 210 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। A 20 meter deep well with the diameter 7 meter is dug up, and the earth from the digging is spread evenly to form a platform 22 meter into 14 meter. Determine the height of the platform। अब देखिए एक कुआं खोदा जाता है, तो वेल किया जाता है, इसमें से जो मिट्टी निकलती है उसको हम स्प्रेड करते हैं 22 मीटर बाई 14 मीटर के एरिया में स्प्रेड करते हैं, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, से इट्स हाइट विल बी x, सपोज इट्स हाइट विल बी x, सो द वॉल्यूम ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल। लेट अस सी 22 इंटू 14 इंटू x should be equal to 22/7 into 7/2, देखिए 7 डायमीटर है, so 7/2 into 7/2, हाइट है 20 into 20, तो देखिए आप यहाँ से ये 22 कैंसिल हो गया, 14 है यहाँ से 7 से कैंसिल हो गया 14, और यहाँ से 2 से ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 5/2, so x will be equal to 5/2, that will be equal to 2.5 मीटर। मीन्स यहाँ पर जो हाइट होगा
अर्थ जो डिपॉजिट करने पर उसकी हाइट जो होगी 2.5 मीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24. The barrel of a fountain pen cylindrical in shape is 7 centimeter long and 5 millimeter in diameter. A full barrel of ink in the pen will be used up when writing 310 words on an average. How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? अब देखिए हमारे को यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं। पहले तो 1/5 ऑफ द लीटर इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1000 मिलीलीटर, दैट विल बी इक्वल टू 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो इंक है, इतने इंक से कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे ये निकालना हमारे। अब फाउंटेन पेन का डायामीटर दिया हुआ 7 mm, लेंथ दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, so radius will be equal to 5/2 mm millimeter. That will be converted into centimeters, that is 5/20 centimeters, that will be equal to ultimately 1/4 centimeter radius हो जाएगा इसका radius. So volume of the ink which is filled in the pen is 22/7 into 1/4 into 1/4 into 7. It will be equal to 11/8 cubic centimeter. Now volume of ink and number of words. Volume of ink, so 11/8 cubic centimeter इंक को यूज करके हम कितने वर्ड्स लिखते हैं? 310 वर्ड्स। 200 क्यूबिक सेंटीमीटर से कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे? दैट विल बी लेट एक्स, सो एक्स विल बी सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 200 इंटू 310 और 11/8 का 8 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे रहेगा। हमने सॉल्व किया इसको एंड इट विल बी नियरेस्ट 100 बताना हमारे को 45,090.90 means it will be equal to 45,100। नियरेस्ट 100 पर करेंगे तो ये 90 है, दैट विल बी टेकन एज ए 100, so it will be, the answer will be 45,100 nearest to the 100. This will be the answer of question number 24. Now question number 25. A closed rectangular box 40 cm long, 30 cm wide and 25 cm deep has the same volume as that of the cylindrical tin of the radius 17.5 cm. Calculate the height of the cylindrical tin correct to 1 decimal place. Take pi is equal to 3.14. देखिए 3.14 मीन पाई आर स्क्वायर, दैट इज 17.5 का होल स्क्वायर किया इंटू एच, दैट विल बी इक्वल टू 40 इंटू 30 इंटू 25, 40 इंटू 30 इंटू 25. So we have to find out the height. So h will be equal to 40 into 30 into 25 divided by 3.14 into 17.5 into 17.5. अब हम डेसिमल हटाने के लिए देखिए 2 डेसिमल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो 4 डेसिमल पॉइंट हो गया. इन ऑर्डर टू रिमूव दिस 4 डेसिमल पॉइंट आई हैव multiplied the numerator by 10,000. देखिए 175 25 से डिवाइड किया है, 7 आ गया, इसको हमने डिवाइड किया, इट इज 400. अगेन डिवाइड किया 25 से,
it will be 7. Now here it will be 16 and 8, ultimately 8 here. यहाँ पर हमने डिवाइड किया 157 और 175 को भी डिवाइड कर दिया था 25 से. अल्टीमेटली विल गेट 2,40,000 डिवाइडेड बाई 7,693. डिवाइड किया, we got it 31.197. That will be equal to 31.2 centimeter. And this will be the answer of question number 25. Now come to the question number 26. A earth taken out on the digging a circular tank of a diameter 17.5 meter is spread all around the tank uniformly to a width of 4 meter to form an embankment of a height 2 meter. Calculate the depth of the circular tank. Correct 2 decimal places. देखिए, एक वेल है, यहाँ से मिट्टी निकाल करके उसके चारों तरफ, कुएं के ऊपर चारों तरफ से मिट्टी को जमा किया जा रहा है, इसकी जिससे उसकी हाइट 2 मीटर हो जाती है और वो चौड़ा कितना है 4 मीटर. इसका विड्थ है, एम्बार्कमेंट का विड्थ है 4 मीटर. चलिए इनर देखिए, पहले तो इसका इनर डायामीटर है 17.5, सो इनर रेडियस विल बी इक्वल टू 8.75. अब इनर रेडियस है वेल का, कुएं का. अब बाहर जाना है तो जैसे यहाँ से लेकर के बाहर इंक्लूडिंग दैट पाथ और एम्बार्कमेंट, so 8.75 plus 4, that is 12.75. So in order to find the depth of the well, what we do, that pi into 8.75 whole square means pi r square into depth. इसका depth मालूम नहीं है, हमने बोला let depth is depth d equal to pi into इसका एरिया रिंग का निकालने के लिए, पहले एम्बार्कमेंट का एरिया निकालने के लिए 12.75 होल स्क्वायर माइनस 8.75 होल स्क्वायर इंटू 2. टू मीटर इसका हाइट है, 2 मीटर इसका हाइट है. अभी देखिए अब हमने इसको वो कर लिया, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लागू किया यहाँ पर. सो देखिए 12.75 प्लस 8.75 यू विल गेट हियर 21.5, माइनस किया तो 4 आया. अब देखिए नीचे है 8.75 पाई पाई तो कैंसिल हो गया, 8.75 यहाँ पर देखिए डेसिमल कितना है, 2 और 2 4, 4 zeros आर देयर. सो एक डेसिमल तो हमने 0.5 का हटाया ऊपर से और एक इसका 3 बच गया. 3 के लिए हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में. अब इसको सॉल्व किया, अल्टीमेटली वी गॉट आंसर 1376 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 1225. सो 2752 डिवाइडेड बाई 1225 is equal to 2.246, that is equal to 2.25 meter. This will be the depth of the well, and this will be the answer of the question number 26. Now come to the question number 27. Water is flowing at the rate of 7 meter per second through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter into a cylindrical tank of the radius of whose base is 40 centimeter. Determine the increase in the water level in half an hour. देखिए एक टैप लगाया, पाइप जोड़ा गया है, वाटर टैंक है जिसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर.
rate of flow of water is 7 meter per second. 7 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे, पूरे चीज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रख देंगे. इंक्रीज इन वाटर लेवल in half an hour will be pi into 2 by 2 whole square into 700 into 60 into 30. मीन्स 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, सेकंड है तो उसको मिनट बनाने के लिए 60 से किया, और फिर हाफ एन आवर में और कितना हो जाएगा, हाफ एन आवर में 30 मिनट और होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. अभी इसको सॉल्व किया. देखिए पाई और पाई से कैंसिल हो गया, 2 by 2 से कैंसिल है, 1 आ गया. 700 इंटू 60 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाई 40 इंटू 40. इसको फर्दर सॉल्व किया. 175 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2. सो 1575 बाई 2 will be equal to 787.5 centimeter. That is equal to 7.875 meter. Rate of flow of water. Now come to, this will be the answer of the question number 27. Now come to the 28. 28. Water flows through a cylindrical pipe of the internal diameter 7 centimeter and 36 kilometer per hour. Calculate the time in minutes it would take to fill the cylindrical tank. The radius of whose base is 35 centimeter and the height is 1 meter. देखिए एक 7 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है और एक वाटर टैंक से जोड़ा गया है जिसका बेस का रेडियस है 35 सेंटीमीटर, हाइट है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर है दिया हुआ. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. It will be converted into meter per second by multiplying it by 5 by 18. So 18 to the 36, that will be the 10 meter per second. This 10 meter will be again further converted into centimeter, that is 1000 centimeter per second. Capacity of the tank will be equal to pi into 35 square into 100. So water flowing in 1 minute will be equal to pi into 7 by 2. The whole square into 1000 into 60. The time required to fill the tank in minute will be equal to pi into 35 square into 100 whole divided by pi into 7 by 2 square into 1000 into 60. It will be equal to 35 into 35 into 4 whole divided by 7 into 7 into 100 into 6. That will be the 1 by 6 of minute. That is 0.16 minute will be required, and this will be the answer of question number 28. Now come to the question number 29. Find the number of the coins 1.5 meters in diameter and 0.2 centimeter thick to be melted to form the right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. You see, let n be the number of the coins melted to form the cylinder, and it will be equal to n into pi into 4.5 by 2 whole square into 10 whole divided by pi into 1.5 by 2 whole square. This is the radius square, and 0.2. Thickness is 0.2. So it will be equal to 4.5 divided by 1.5 in bracket whole square into 100 by 2. That is, here you will get 3, and the square of the 3 will be 9. And 100 divided by 2, that is 50. So in this way we will get 450 number of coins required to melt and to form the cylinder. Now come to the question number 30. If 1 cubic centimeter of the cost of iron weighs 21 gram, then find the weight
of the cast iron pipe of length 1 meter with a bore of 3 centimeter in which the thickness of the metal is 1 centimeter. देखिए 1 cubic centimeter of iron weighs 21 gram. It is given there is a internal diameter is 3 centimeter, thickness of the cylinder is 1 centimeter. So internal radius will be equal to 3 by 2, that is 1.5 centimeter. Internal. Now external radius will be equal to 1.5 plus 1, that is 2.5 centimeter. So weight of the cast iron will be equal to 21 into 22 by 7 into 2.5 square minus 1.5 square in bracket closed into 100. 100, what 1 meter is equal to 100 centimeter. So 22 by 7 into 4 into 1 into 100 into 21. Now solve it. 7 3 are 21, 3 here. So again multiply it. You will get 26,400 gram. That will be converted into kg. So it will be 26.4 kg, and this will be the answer of question number 30.